Good morning, everyone. So we are heading towards the last topic of the first module, and that is about strategic profit management. Now, this topic is all about the basic function of any business, evaluation of profit. How to decide profitability, how to decide how to evaluate profitability, because there can be different ways of evaluating profitability. So when I talk about profitability, evaluation, you need to understand the profitability evaluation can be segment wise. You may split your business into various segments: North, South, East, West, Middle East, Western, Asian countries, Asia Pacific. You may also have segments decided based on the customer base, like North Indian, South Indian, and all that stuff. South Asians, Western Europeans, any type that you will decide. You as a businessman, you will take the call. What should be the strategy? What should be the basis of segmentation? And for each segment, you will start finding out profitability. You will have a comparison of various different segments. And whenever we do that, that comparison is always done. Remember carefully, the comparison is always done based on profitability, not on the basis of profits. Now, what is profitability? It is always percentage of profit on sales. Because see, profit can be different, sales amount can be different. You can't direct have a comparison based on two profit figures, because your two profit figures will be an outcome of different amount of sales. So rather than focusing on profit amount, you rather focus on total sales as well. I mean, you should consider sales as a part of decision making. So it is not profit amount, it is profitability. That means it is profit percentage. So whichever segment gives you more profit, that segment is to be selected first. Then you can have profitability based on product. Now, this is quite obvious. If you're dealing with three different types of products, product A, product B, product C, you can do this. You can have profitability department wise. You can have profitability customer wise. Customer wise segregation, customer wise allocation can also be done. So basically, that is your call. You as a manufacturer, you know how to analyze your profit in a better manner. But there are two separate concepts which we need to understand. One is direct product profitability, and the other one is strategic evaluation. Strategic evaluation will look after the evaluation, in-depth evaluation of your profit. How much is the profit? Is the starting point. And from how much, we will also find out why so much of profit. See, even if your profit of the current year is more than the previous year, still you need to know the reasons. It's not that only adverse variances are evaluated, even favorable variances are to be evaluated. If I give my team a target of earning a profit of 10 lakhs, if I give my team a target of earning a profit of 10 lakhs, and they give me profit of 13 lakhs, so they have given me 3 lakh more, but I will not be happy with it unless I evaluate it thoroughly.
Are you getting me? So I will find out reasons for that addition in the profit of 3 lakhs. Now you must be thinking, why are you doing all these things? Keep quiet. No, you are getting more. Why are you worried about it? Chupchap बैठ. तेरे को भी क्या है सब? See, I estimated profit of 10 lakhs. I gave them target of 10 lakhs. They are giving me profit of 13 lakhs. I will evaluate the reasons for getting 3 lakh rupees more if I find that those reasons were normal. If I find that those reasons were normal, next time onwards, I'll give them target of 13 lakhs and not 10. So even if there is a favorable variance, I will always try to figure out why exactly favorable. Adverse, of course, yes, we always find out reasons for getting a loss. But even if there is a profit, try to find out, is the profit because of normal situation or abnormal situation? Abnormal, leave it. Normal, then raise your standard, because they can give you a profit of 13 lakhs. Why are you giving them target of 10 lakhs? So these are important factors which we need to understand. And these are the 4 factors which we are supposed to discuss in this chapter called as strategic profit management. Now, the first part itself in this chapter is strategic profit management. So what I'm going to do is we'll complete this part first. Then we'll go for other calculations. Okay. Now for that, just take a screenshot of this question. Just a minute. And add one more line to it. Yeah. Analyze changes and reconcile. आप एक काम कर सकते हो. You take a screenshot of this. You can't see the line added. See, 2 words I added. This is your additional question. So kindly take the screenshot of it. ले लिया screenshot? Okay. We'll first solve this question. उन्होंने ना theory दी है सिर्फ, but then understanding theory will be quite more challenging. So I don't want to go for theory. I want you to understand the question. So we'll be starting with the question itself. Aditya Decors Limited, AOL, is a leading manufacturer of luxury sanitary products and has divided its whole business into different product segments. At the last year, the management of ADL has decided to make some changes, and it's one of the product line Adi. The improved version was made available for sale from 1st of April 20-something-4. At the end of financial year 20X4X5, the Finance and Accounts Department has extracted some relevant data for the product line Adi to analyze the decision taken last year. Data related with Adi for financial year 20X3, 20X4 and 20X4, 20X5 is as follows. Quantity sold, we can clearly see the change. Quantity sold, we can clearly see the change. 4 lakhs was your quantity last year. This year it is 4,30,000. Selling price has gone up. Material consumption has also gone up. अब material के बारे में देखो.
24 lakhs. Yes, Nishant, you can go ahead. 24 lakhs. 24 lakhs kgs you have consumed for 4 lakh kgs. So in that case, so my material consumption in the first year, 24 lakh kgs you consume for 4 lakh units of finished goods. So that comes to 4 kgs per unit. Similarly, they have given you labor hours on the next line. 32 lakh hours were taken in the last year. That means in the first inning, if I the first innings, sorry, the first year, if I talk about I have consumed 6 kgs per unit, and I have taken 8 hours for producing 1 unit. Acha, guys, you keep on copying it. Don't stop and wait. Okay, I'll let you know if you're not supposed to copy anything. ये copy करना शुरू कर दो. Copy कर लिया ये? Please copy this. Done. चलिए. Next. Cost of material last year, current year. Rate of labor last year, current year. Fixed cost is 1 crore 60 lakhs, which has gone up to 1 crore 76 lakhs. There is a rise of 16 lakhs. There is a rise of 16 lakhs in terms of fixed cost. ADL has the capacity to produce 5 lakh units. Now, I don't care how much is the capacity. I know in the first year I have produced 4 lakhs, and in the second year I have produced 4 lakh 30. Your question says, analyze the change in the operating income of 2 years with respect to growth, price recovery, and productivity component. Now, guys, when you talk about change in profit, first of all, you should know how much is the change in profit. So what we are supposed to do is we will first prepare statement of profit
for both the years. Okay. We'll first prepare statement of profit for 20x3 x4, 20x4 x5. Okay. So we'll have to start with sales. Four lakh units into 4175. 16,700 lakhs और इसका आएगा 4,30,000 multiplied by 4325. 4325. So this will be 18,597.5 lakhs. Am I right? From this, we are supposed to subtract cost. And in cost also, we have material first. अब मटेरियल का तो पहले से पता है 24 lakhs into 470 and 25.10 lakhs into 485. 24 into 470. Am I right? 25.10 multiplied by 485. Yes. Followed by labor. Labor may be clear है 32 lakh hours at 30. 32 lakh hours at 30 and 3480 at 31. करेक्ट. इसके अलावा सिर्फ फिक्स कॉस्ट है. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी आ सकती है लेकिन नहीं दी है. 160 lakhs, 176 lakhs. Let us first take the total of the cost structure. 11,280, 960, 160. 12,173.5, 1078.8 and 176. 13,428.3 lakhs. So your sales will be marked as A, your cost will be marked as B, and your profit as usual will be A minus B.
This will be 5169.2 lakhs. This will be 4,300 lakhs. So that's your first statement of profit. Clear? Shall I proceed? Okay. Now we can clearly see the rise in the profit, but I'm not happy with it unless I evaluate that rise. I need to find out, unless I find out reasons for it, I will not be happy. Now there will be three reasons. One is growth. Other one is price. And third one is productivity. Productivity can also be called as efficiency. See, if your profit has gone up, the first reason can be growth. Growth is related to only quantity rise. Growth is related to only quantity rise. My sales quantity was 4 lakhs in the first year, and in the next year it went up to 4,30,000. अगर मेरी सेल्स क्वांटिटी बढ़ती है तो मेरा सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ता ही है, बट मेरा मटेरियल का कंजम्पशन भी बढ़ेगा और लेबर के आवर्स भी बढ़ेंगे. So if it has a favorable impact on my revenue structure, it will have an adverse impact on my cost structure. 30,000 से क्वांटिटी बढ़ा दी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगी. Okay, so that is the first analysis. Second analysis is purely about pricing. यहाँ पे मैं क्वांटिटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है. और तीसरा है प्रोडक्टिविटी. जो काम 100 किलो में होना चाहिए वो अगर 80 में करते हो तो उधर भी पैसा बचता है. जो काम 100 आवर्स में होना चाहिए उसके लिए 120 लेते हो तो उधर ज्यादा खर्चा होता है. सो इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर बिफोर वी गो फॉर एनालिसिस. तो अपना सबसे पहला एनालिसिस, आई होप यू अंडरस्टूड थ्री फैक्टर्स: ग्रोथ, प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी. सो आई एम फर्स्ट गोइंग फॉर growth factor, and growth factor is only about quantity. उसमें फर्स्ट पार्ट रेवेन्यू. उसमें फर्स्ट पार्ट रेवेन्यू. Now if I talk about revenue, we can clearly see quantity was 4 lakhs. It went up to 4,30,000. Quantity was 4 lakhs. It went up to 4,30,000. So 30,000 units were produced more, multiplied by selling price 4,175. Multiplied by selling price 4,175. This is my favorable impact on revenue. ये standard costing नहीं है. You just want to know the impact of quantity rise. You don't want your price change to be included in this because that will be considered in the second segment. मैंने इसीलिए पहले साल की सेलिंग प्राइस ली है, दूसरे साल की नहीं. Are you understanding this? 4 lakhs का 4,30,000 हुआ. 30,000 से क्वांटिटी बढ़ गई तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था. हाँ, 4,175 का 4,325 हुआ है. ये पार्ट में प्राइस सेगमेंट में एनालाइज करूंगा, अभी नहीं. Then I have second part, cost. कॉस्ट पे सबसे पहले मटेरियल.
एकदम सिंपल कैलकुलेशन बताऊं? चलो एकदम ध्यान से सुनना. You consume 24 lakhs in the first year. You consume 24 lakhs in the first year. बराबर? लॉजिकली सुनो. You consume 24 lakhs in the first year. During second year, if you have produced 4 lakh 30,000 kgs, sorry, if you have produced 4 lakh 30,000 units, your ideal consumption should have been at 6 kgs per unit. Multiplied by price. Multiplied by price. Price also will be taken for the first year. मतलब इन शॉर्ट आप ये बताना चाहते हो कि 24 lakhs में जो काम होना चाहिए था 30,000 से क्वांटिटी बढ़ने की वजह से अब वो 25.80 में होगा. So that extra quantity needs extra material to be consumed. Wait, एक मिनट ना. 24 lakhs minus 25.80 into 470. 846 lakhs. 846 lakhs adverse will be your variance. आपको समझा मैंने क्या किया? मैंने एक्चुअल कंजम्पशन नहीं लिया है बिकॉज दैट विल बी सी. एक्चुअल कंजम्पशन में हुआ क्या है 80 lakhs के बदले आपने 25,10,000 कंज्यूम किया. बट दैट इज एन आउटकम ऑफ प्रोडक्टिविटी ना. वो तो थर्ड सेगमेंट में कंसिडर होगा. और 470 के प्राइस के बदले 485 खर्च करते हो ये प्राइस सेगमेंट में कंसिडर होगा. इसलिए यहाँ पे सिर्फ वो देखना है कि 30,000 से क्वांटिटी बढ़ने के बाद मटेरियल पे क्या असर होता है. तो भाई 30,000 से क्वांटिटी बढ़ेगी तो 4,30,000 इंटू 6 इतना कंजम्पशन होना चाहिए था. आपको अगर अलग तरीके से निकालना है तो वो भी समझा देता हूं. ध्यान से देखना. 4 lakhs आपकी फिनिश गुड्स क्वांटिटी जो 4,30,000 हो गई. 30,000 यूनिट्स आपने ज्यादा बनाए तो 6 kgs पर यूनिट के हिसाब से 1,80,000 kgs ज्यादा कंज्यूम करने पड़ेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 470. बात तो एक ही है. 846 lakhs एडवर्स. आपको समझ में आ रही है बातें? ओके. कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल हुआ. अब मैं लूंगा लेबर. लेबर का भी कैलकुलेशन सेम. 30 lakhs आवर्स लगे थे फर्स्ट ईयर पे. अब सेकेंड ईयर में 4,30,000 यूनिट्स बनने की वजह से 8 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से 4,30,000. सो 30 lakhs के बदले 30,000 यूनिट्स बढ़ने की वजह से 34.4 lakhs कंज्यूम होने यूटिलाइज होने चाहिए थे. And I'm going for the original price because I'm not considering, neither I'm considering efficiency here, neither I'm considering efficiency here, nor I'm considering price change here. So 4.4 into 30. So 30 minus 34.4 into
132 lakhs एडवर्स। इसी का ऑल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए तो वो भी देख लो। 4 लाख फिनिश गुड्स के बदले 4,30,000 बना दिए। योर फिनिश्ड क्वांटिटी इंक्रीज बाय 30,000। योर फिनिश्ड क्वांटिटी इंक्रीज बाय 30,000। So 30,000 units into point 30,000 units into 8 hours. 2.4 hours ज्यादा लगने चाहिए थे। एक मिनट, पहले साल में कितना है? 32 है ना? 32। 32 minus 34.4 into 30. This is 72। ये भी 72। हाँ ये 32 है, मैंने वो गलती से 30 लिया था। 32। ओरिजिनल आवर्स 32 है ना फर्स्ट ईयर के। 32 lakhs। आपको कैलकुलेशन समझा? हाँ 32 है, 32 है। अरे ये कैलकुलेशन समझा? ग्रोथ फैक्टर में वी आर सिंपली फोकसिंग ऑन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दोज एक्स्ट्रा 30,000 यूनिट्स। समझा? इसीलिए मैंने सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब पहले साल के लिए, और मैंने कंजम्पशन और आर्स रिक्वायरमेंट भी पहले साल के लिए। दूसरे साल में कंजम्पशन कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, आर्स कम लगे, ज्यादा लगे, ये तो लास्ट सेगमेंट में, प्रोडक्टिविटी सेगमेंट में कवर हो जाएगा। प्राइस चेंज हुई है, ये आपका सेकंड सेगमेंट में कवर हो जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि 30,000 जो एक्स्ट्रा बनाया आपने, 30,000 जो आपने एक्स्ट्रा बनाए, उसकी वजह से रेवेन्यू पे और कॉस्ट पे क्या असर हुआ है। सो कॉस्ट पे मैंने दो चीजें हैंडल कर ली, मटेरियल एंड लेबर। थर्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर, सो उसमें कुछ नहीं आएगा। सो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन योर क्वांटिटी स्ट्रक्चर गाइस क्विकली। ग्रोथ पार्ट एक बार देख लो। डन। नोट लिख लो। While evaluating growth factor, fixed cost doesn't change because of quantity बेटा। 4 लाख का 4,30,000 बेचा, उसके वजह से सेल्स अफेक्ट हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट अफेक्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट अफेक्ट हो सकती है। फिक्स कॉस्ट कहां से अफेक्ट होगी? पीयूष कुमार, इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, राइट ऑन। क्या लिखा आपने अब तक? कुछ लिखा थियरी में? नहीं, लिखो। while analyzing growth factor while analyzing growth factor while analyzing growth factor we evaluate the effect of while analyzing growth factor we evaluate the effect of rise in the finished goods quantity rise in the finished goods quantity
rise in the finished goods quantity rise in the finished goods quantity on revenue as well as variable cost. On revenue as well as variable cost. On revenue as well as variable cost. Due to additional 30,000 units sold, due to additional 30,000 units of finished goods, due to additional 30,000 units of finished goods, due to additional 30,000 units of finished goods. There is a favorable impact on revenue. There is a favorable impact on revenue. There is a favorable impact on revenue. As well as an adverse impact on material cost and labor cost. There is a favorable impact on revenue as well as an adverse impact on material cost and labor cost. Write into brackets. Write into brackets. Due to additional quantity of finished goods, 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 consumption requirement increases. Consumption requirement as well as hours requirement increase. Consumption requirement as well as hours requirement increase. Consumption requirement as well as hours requirement increase. Hence, adverse variance. Since there is no impact on fixed cost, 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 due to quantity rise, due to quantity rise, it cannot be considered. It cannot be considered. Next line. Next line. Actual consumption and actual hours of second year. Actual consumption and actual hours of second year. Actual consumption and actual hours of second year are not considered here, are not considered here, are not considered here as that will be evaluated during productivity evaluation.
as that will be evaluated during productivity evaluation. As that will be evaluated during productivity evaluation. Next slide. Even selling price material price, even selling price, material price, and labor rate. Even selling price, material price, and labor rate. Even selling price, material price, and labor rate are considered of the first year. Are considered of the first year. As price change will be evaluated, as price change will be evaluated as a separate segment of reasons. As a separate segment of reasons, which can be done as follows. Which can be done as follows. आपको समझा क्या बोला मैंने? ग्रोथ में यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वो 30,000 एक्स्ट्रा यूनिट जो मैंने बना के बेचे, उसका इंपैक्ट रेवेन्यू पे, मटेरियल पे, लेबर पे कितना होगा. आई जस्ट वांट टू नो द इम्पैक्ट. सो मेरा कंजम्पशन पैटर्न भी फर्स्ट ईयर का है, मेरा प्राइसिंग भी फर्स्ट ईयर का है. प्राइसिंग सेकेंड ईयर का मैं प्राइस इवैल्यूएशन में लूंगा और कंजम्पशन सेकेंड ईयर का मैं प्रोडक्टिविटी इवैल्यूएशन में लूंगा. आर यू गाइस क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट, ग्रोथ? फिक्स कॉस्ट के लिए नोट लिखिए ना. लिखवाया. Fixed cost is not considered as doesn't change with the change in the quantity. Fixed cost के लिए नोट दिए ना. हाँ, चलो. Now let's go for pricing effect. प्राइस बढ़ने से कम होने से आपका डायरेक्ट असर होता है रेवेन्यू पे. मतलब how much was your selling price? 4175. 4175 फर्स्ट ईयर में 34325 सेकेंड ईयर में हो गई 4175. 4175 फर्स्ट ईयर में थी, 4325 सेकेंड ईयर में थी. 150 से सेलिंग प्राइस बढ़ गई, मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट. अब आउटपुट कौन सा लोगे आप लोग? सेकेंड ईयर का. क्योंकि 150 से सेलिंग प्राइस अगर बढ़ती है, नहीं मोक्षा, कॉन्सेंट्रेट. 150 से सेलिंग प्राइस अगर बढ़ती है, या 150 से अगर सेलिंग प्राइस बढ़ती है, तो 4,30,000 sold in the second year give me 645 lakhs favorable variance. Do not get confused with both. ग्रोथ फैक्टर अलग था, प्राइस फैक्टर अलग है.
मैं जब प्राइसिंग का इम्पैक्ट कॉस्ट पे सोचता हूं तो मुझे सबसे पहले मटेरियल याद आता है। 470 का प्रोडक्ट, 470 का मटेरियल 485 में खरीदा। लेबर 30 पर आवर के बदले 32 पर आवर दिया है। कैन यू सी दिस? 470 का 485 ये प्राइस चेंज है। वैसे ही 30 का 31 हुआ है, सॉरी 30 का 31 हुआ है। 30 का 31 हुआ है, ये प्राइस चेंज है फॉर लेबर। बराबर। अब सेकेंड ईयर की क्वांटिटी लेनी है मुझको। सेकेंड ईयर के क्वांटिटी में भी आई विल टेक 2580 एंड 3440। I am taking the quantity that should have got consumed and I am taking number of hours which should have been paid. क्योंकि अगर इसके बदले मैं एक्चुअल ले लेता हूं तो that means I have considered productivity factor also, which I don't want to consider here. 470 minus 485 into 25.8. Price has gone up 387 lakhs adverse and 34.40 lakhs adverse. अब प्राइस का एक असर फिक्स कॉस्ट पे भी होता है। 160 का 176 लाख्स हो रहा है, मतलब 16 लाख्स एडवर्स। ये प्राइसिंग इफेक्ट ही है, फिक्स कॉस्ट की प्राइस नहीं होती। बट आर जो आपका मंथली रेट है वो भी तो एक तरह की प्राइस है ना। आज रेंट अगर 2 लाख पे करते हो 11 महीने के लिए, जैसे ही फर्स्ट टेन्योर खत्म होता है, सेकंड टेन्योर से 10% राइज होगा तो 2 लाख का रेंट 2,20,000 हो जाएगा। मैं सेकेंड ईयर की क्वांटिटी ले रहा हूं वरना, मैं सारे कैलकुलेशंस में सेकेंड ईयर कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन जहां पे मेरा प्रोडक्टिविटी का असर आ रहा है मटेरियल और लेबर में, वहां पे मैं आई एम गोइंग फॉर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड आवर्स विच आई शुड हैव कंसीडर्ड। अपना थिंकिंग बंद रखो और मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। 25,80,000 I should have consumed in the second year. I have consumed 25.10, but that factor will be considered in productivity, not in pricing. ये हो गया आपका प्राइस इफेक्ट। एक बार प्राइस इफेक्ट ग्लांस कर लो, इसका भी नोट लिखवा देता हूं। प्राइस इफेक्ट गो थ्रू कर लो। यस बच्चा लोग, इज इट डन? प्लीज राइट ऑन अ नोट। प्लीज राइट ऑन नोट। प्लीज राइट ऑन अ नोट। While evaluating impact of price, while evaluating impact of price,
The manufacturer gets affected. The manufacturer gets affected. The manufacturer gets affected in a favorable or adverse manner. The manufacturer gets affected in a favorable or adverse manner on the basis of quantity of the second year. On the basis of quantity of the second year. For material and labor. For material and labor, we have to consider. For material and labor, we have to consider. For material and labor, we have to consider the standard quantity and standard hours. The standard quantity and standard hours that we should have utilized. Standard quantity and standard hours that we should have utilized. Standard quantity and standard hours that we should have utilized in the second year. In the second year. In the second year. Actual quantity and actual hours of the second year. Actual quantity and actual hours of the second year. Actual quantity and actual hours of the second year, which are different from standard, which are different from standard, must be evaluated, must be evaluated during productivity or efficiency evaluation. Must be evaluated during productivity or efficiency evaluation. Productivity or efficiency evaluation. जैनिश अभी क्लियर हो गया? Jainish, is this clear now? Okay. Third one. Third evaluation. Productivity or efficiency evaluation. Acha, productivity and efficiency evaluation can be done only with the help of material and labor. Fixed overheads में कोई efficiency evaluation नहीं होता. स्टार्ट करें. ओके, आपकी मटेरियल की क्वांटिटी होनी चाहिए थी 25.80 lakhs, बराबर ना? लेकिन हमने काम उड़ा दिया 25.10 lakhs में. और 485 जब प्राइस थी, सुनो,
25.8 माइनस 25.1, 485 जब प्राइस थी, आपने 70 लाख किलो बचाया। सो 339.5 lakhs फेवरेबल। आपको समझा? 25.8 lakhs के बदले 25.10 lakhs में ही आपने काम उड़ा दिया। तो जिस साल प्राइस 485 थी, उस साल आपने 70,000 किलो बचाया, जिसका इंपैक्ट है 339.5 फेवरेबल, फॉलोड बाय लेबर। $34.40 आवर्स काम करना चाहिए था। 34.4 आवर्स काम करना चाहिए था, आपके लोगों ने 34.80 आवर्स काम किया है। आपके लोगों ने 34 लाख 80 आवर्स काम किया है, वो भी उस साल जिस साल रेट चल रहा था 31। सो 12.4 lakhs, लेकिन बॉस एडवर्स, दिस इज इनएफिशिएंसी विच इज टेकन केयर ऑफ। अभी कलेजे में ठंडक पड़ी, अभी समझा, मैंने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए। ग्रोथ फैक्टर में आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन इम्पैक्ट ऑफ 30,000 एक्स्ट्रा बनाने से 30,000 का एक्स्ट्रा सेल्स होगा, और 30,000 का एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा, मटेरियल का एक्स्ट्रा आवर्स भी यूज होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल कितने आवर्स यूज हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल प्राइस क्या थी, बिकॉज प्राइस विल बी टेकन केयर ऑफ इन प्राइस सेगमेंट। कंजम्पशन, एक्चुअल कंजम्पशन एंड एक्चुअल आवर्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन कंजम्पशन सेगमेंट। फिर मैंने दूसरा सेगमेंट उठा लिया, प्राइस। प्राइस का जब सेगमेंट में उठा रहा था, तो 30,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स प्राइसिंग के वजह से 4,30,000 जो एक्चुअल बेचा, उस पर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 645। उसके बाद प्राइसिंग का इम्पैक्ट मटेरियल पे कितना, लेबर पे कितना, ये जब ढूंढ रहे थे, तो जो क्वांटिटी आपको कंसीडर करनी चाहिए थी, दैट वाज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट शुड हैव गॉट कंज्यूम्ड इन सेकंड। एक्चुअल अलग है, तो वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में निकल जाएगा। समझ में आया? सो ये था आपका रेवेन्यू इफेक्ट। ये ग्रोथ इफेक्ट, और ये रहा आपका प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। यस, स्टैंडर्ड रेट नहीं, स्टैंडर्ड कंजम्पशन। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वगैरह भेज रहे हो क्या ये? May I please see that calculation once? Which calculation you want, Dylan? ओके, मैं सारे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट देता हूँ। जो लोग लेट लतीफ है, कोई लेट आया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज माय फर्स्ट स्क्रीन। This gives me the profit of first year and second year. Then I started evaluating it. This is my second requirement, second screen. Then I have the third one.
Then I have the fourth one. और इसके बाद आएगा आपका लास्ट, या फिर फोर्थ जो है आपका, उसमें थोड़ा सा छोटा करके फोर्थ स्क्रीनशॉट ऐसा ही ले लो सीधा, ये ले लो फोर्थ स्क्रीनशॉट। फोर्थ स्क्रीनशॉट ऐसा ले लो आप, फोर्थ वाला डिलीट कर दो। क्लियर? ओके, नाउ रिकंसिलिएशन पूछा है, तो जितने भी वेरिएंसेस निकाले एक साथ जमा कर देंगे हम लोग। Reconciliation means giving reasons for difference between two figures. So my profit for the year twenty something three something 4 is 4,300 lakhs. 4,300 lakhs. Reconciliation starts with growth. ग्रोथ में भी सबसे पहले रेवेन्यू, उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट में यू हैव मटेरियल and labor. Then you will write price. Then in price you will write material, labor and fixed cost. And then you will write productivity or efficiency. And there you will write material and labor. और ये सब कुछ लिखने के बाद you must get profit for the year 2000, 2004, 2005. समझ में आया? You can complete the reconciliation now and tally this. Do it on your own quickly. You already have all those data. हाँ, प्राइस में रेवेन्यू नहीं लिया हम लोगों ने। हाँ, तो प्राइस में देयर विल बी रेवेन्यू, मटेरियल, लेबर, फिक्स कॉस्ट एंड देन प्रोडक्टिविटी में मटेरियल एंड लेबर। चलो इतना खत्म करो। ग्रोथ में रेवेन्यू एंड कॉस्ट में सिर्फ दो आएंगे, मटेरियल, लेबर। प्राइस में your first impact will be on the revenue, second is material, third one is labor, fourth one is fixed cost. Productivity में वापस दो, and you must get 5169.2 lakhs. 5169.2. चलो खत्म कर दो इसको।
चलो बच्चा लोग डन, टैली हो रहेगा देखो। टैली हो गया? No, I can't keep on showing screenshot for each and every student. When I show it, you're supposed to take it or get it from your friends now. अच्छा, और कौन है अपने साथ? I want those notes also to be put on the group. Disha, can you do that? Beta, please. या दिशा, एक काम करो दिशा, पूरे सॉल्यूशन का ही डाल दो स्क्रीनशॉट, तो खुशी को मिल जाएगी वहां पे, नोट्स भी मिल जाएंगे और उसको जो स्क्रीनशॉट चाहिए, जो ब्लर आया था उनका, वो भी सॉर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। इज दैट फाइन खुशी? दिशा पूरा क्वेश्चन ही डाल देना। या थैंक यू सो मच। रिकंसिलेशन टैली हो गया? सो दैट वाज योर स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। आपको समझ में आया क्या क्या इवैल्यूएट किया? सिर्फ प्रॉफिट बढ़ गया है, इसमें खुश नहीं हुए। ग्रोथ फैक्टर, प्राइस फैक्टर एंड कंजम्पशन और एफिशिएंसी फैक्टर वी कंसिडर्ड। सो लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। अभी इन्होंने ना सिर्फ फॉर्मूलाज दिए, हम लोग ने एक भी फॉर्मूला लिखा नहीं। ये फॉर्मूला बेस पढ़ने का जो ट्रेंड है ना, वो छोड़ दो अभी, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देगा लाइफ में। चलिए, illustration number 1, Y Limited. Y Limited is a manufacturer of cardboard boxes. Y Limited is a manufacturer of cardboard boxes. An analysis of its operating income between 2023 and 24 shows the following. देखो, revenue 40 lakhs, which has gone up to 4620. Operating income 10 lakh 80, मतलब profit 10 lakh 80 का 1442 हुआ है। Correct? Y Limited sold 4 lakh boxes and 4 lakh 20,000 boxes in 2 years respectively. 4 lakhs का 4 lakh 20,000 हुआ है। During 2024, the market for cardboard boxes grew 3% in terms of units, and all other changes are due to companies' differentiation and strategy and differentiation strategy and productivity part. Okay. Compute how much the change in operating income from 23-24 is due to industry size factor, market size factor, productivity and product differentiation, and also reconcile to profit figures. देखो, rise in quantity, आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 4 lakhs। 4 lakhs का 4 lakh 20 हुआ। 4 lakhs का 4 lakhs 20 हुआ, बराबर? ध्यान से सुनना, इसमें से कुछ मार्केट साइज की वजह से था, कुछ आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से था। कितना परसेंट बोला है? 3%। 3% मतलब 4 lakhs का 3%। अरे 4 lakhs का 3%, 12,000 यूनिट्स और अदर 12,000 बॉक्सेस। 12,000 बॉक्सेस में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मार्केट ही बढ़ गया है, तो मार्केट के चक्कर में ज्यादा बिक रहा है। हाँ, 8,000 बॉक्सेस
is due to you. अरे is that part clear? देख लो क्वेश्चन है सामने तुम लोग के. मतलब 60% is market size, 40%, 60% is market size and 40% is strategy. 60% market size, 40% is strategy. यहाँ तक कोई डाउट? एकदम क्लियर? तो इसका मतलब ये जो ग्रोथ फैक्टर है, अरे क्वांटिटी की बात करते हो तो ग्रोथ फैक्टर ही लेना चाहिए. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी राइज, कैन आई से 1,40,000 के भी दो टुकड़े होंगे. 60% जो है दैट इज अ ग्रोथ फैक्टर, और बाकी जो 40% है वो एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस फैक्टर होता है यार. अरे हाँ या ना? सो मुझे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा. देख लो, अभी पहले ये लिख लो. डन. श्रीजा, 20,000 बॉक्सेस में से क्वेश्चन बोलता है कि 60% इज ड्यू टू मार्केट साइज. मतलब वो तो वैसे भी बढ़ने वाला था, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें. तो आइडियली 12,000 से बॉक्स, 12,000 से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 20,000 से बढ़ गई. मतलब ऊपर का 8,000 तो मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ होगा ना. प्रोडक्टिविटी की वजह से क्वांटिटी नहीं बढ़ती. मार्केट में आपका सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका रीजन, अगर क्वांटिटी मार्केट साइज नहीं है तो मार्केट शेयर है. मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा आपका? ड्यू टू प्राइसिंग इफेक्ट. समझे? वही समझाने जा रहा हूं अभी. तो मतलब, सॉरी, मतलब ये 1,40,000 का जो ग्रोथ इफेक्ट दिख रहा है आपको, 1,40,000 का जो ग्रोथ इफेक्ट दिख रहा है आपको, वो 60% जो है वो मार्केट साइज है, वो ग्रोथ इफेक्ट ही है. तो बैलेंस 40% जो है ये एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस इफेक्ट है. आपको समझ में आया? तो मैं इसको प्राइस इफेक्ट में ऐड करना चाहता हूं. तो 164 मेरा एग्जिस्टिंग प्राइस इफेक्ट है. माय एग्जिस्टिंग प्राइस इफेक्ट इज 164. 164 प्लस 56, 164 प्लस 56, 220. तो मतलब आइडियली ये ऐसा होना चाहिए, 10,80,000, 10,80,000, 84,000 फेवरेबल. ये ग्रोथ का इंपैक्ट है. लेकिन 56,000 ग्रोथ का इंपैक्ट नहीं है, तो उसको मैंने प्राइस के साथ जोड़ दिया, ये प्राइस का इंपैक्ट है. और ये हुआ आपका कंजम्पशन का इंपैक्ट इंटैक्ट. मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. 1,40,000 एंड 164 के बदले, 1,40,000 एंड 164 के बदले इट विल बी 84,000 एंड 2,20,000.
अरे एफ ही है रे, वो गलती से लिख दिया, समझा ये? क्वांटिटी इंक्रीज्ड, सो देयर इज अ ग्रोथ फैक्टर। लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? मार्केट साइज। 60% काम तो मार्केट ने किया है, तुम लोग का कोई क्रेडिट नहीं है, तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया, दैट इज अ ग्रोथ फैक्टर। तो 20,000 के क्वांटिटी राइज, अरे ना ध्यान से सुन, 20,000 के क्वांटिटी राइज के पीछे दो रीजन है। एक, 12,000 तक मार्केट साइज, मतलब मैं कुछ भी नहीं करूं ना, कुछ भी नहीं करूं, तो मार्केट ही इस कदर फट गया है कि 12,000 एक्स्ट्रा यूनिट बिकने थे, मैंने उसके ऊपर भी 8,000 बेच दिया, दैट मींस इट हैज टू बी अ प्राइस इफेक्ट। लिखा है क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ आर स्ट्रेटेजीज। कौन सी स्ट्रेटेजी? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी। तो फिर 56,000 जो है, जो 40% राइज है, वो मैं ग्रोथ में क्यों डालूं? वो तो प्राइस में डालना चाहिए ना मुझे। तो 1,40,000 को मैंने स्प्लिट कर दिया, जो उसका ग्रोथ है 84 का, वो 84 रखा, जो प्राइस की वजह से ग्रोथ है वो मैंने 1,64,000 के प्राइस में ऐड कर दिया, तो प्राइस का हो जाएगा 2,20,000। और ना, इज दिस क्लियर? ये लिख लो तुम लोग, टेक्स्ट बुक में चाहिए तो ऐसे ही। What promotional activities? What have they mentioned? What promotional activities? What have they mentioned? Nothing. चलो ठीक है, आप अज्यूम कर लो promotional activities. Tell me one example. Advertisement, that means it is a fixed cost which is incurred. तो fixed cost का impact भी pricing में ही आता है. Is that clear? अब इसमें जो ये जो पहला वाला पार्ट दिया उसको इग्नोर कर लो, उसकी जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, सोल्यूशन में। द सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये मतलब ये आंसर दिया इन लोगों ने, हम लोग ने जो लिखा है वो 10,80,000, 84, 220, 58। 10,80,000, 84, 220, 58। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किए, बाकी सब कुछ सेम है। प्लस उन्होंने अपने तरीके से वर्किंग दिया है। You also already have my working with you, so you can go ahead with that. Is that part clear? Yes. So we started today's session with profitability analysis, and I had given you some chart. From the chart, we completed this part, strategic evaluation. Let's go to direct product pricing or direct product profitability. Chalo. Now, direct product profitability means you might be having certain expenses which are directly chargeable to the product. Like if you have a material cost, if you have a labor cost, if you have direct expenses, there are certain cost structures which can be directly attributable to one unit. अरे वो क्या लिखा है, जरा वो जूम कर रहे हैं, वो मीटिंग चैट बॉक्स पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। ऑपरेटर जी, कृपया चैट बॉक्स को एनलार्ज करें, मैक्सिमाइज करिए उसको। Due to adverse pricing strategy, the auction sales grow only by say by 2%.
इट इज पॉसिबल. अगर फॉल होता तो वो भी कर लेते हम लोग. अगर फॉल होता तो वो भी कर लेते, लेकिन फॉल है नहीं ना. क्लियर. Okay. Now, direct product profitability means what I was telling you. There are certain cost structure which are directly attributable to one unit of the product. जैसे material हुआ, जैसे labor हुआ, जैसे direct expenses हुए. There are so many different types. जैसे commission हुआ, you can directly attribute to one unit. पर क्या होता है? There are certain common cost structures which cannot be attributed directly to the customer, directly to the per unit. तो उसको convert कैसे करने का? That is your direct product profitability. So it is used to measure the profitability of an individual product and assist management to know the true profitability to make appropriate decision. Are you getting me? Because we want to know common cost structures. We want to know common cost structures to be split as product wise cost structure. मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ या 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, ए एंड बी. मुझे पता है ए के लिए मटेरियल क्या है, बी के लिए मटेरियल क्या है, हाउ मेनी व्हाट इज अ टाइप ऑफ लेबर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर बी, व्हाट इज अ टाइप ऑफ लेबर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ए. सब पता है मुझे. मुझे प्रॉब्लम हो रहा है व्हेन आई कम अक्रॉस अ कॉमन कॉस्ट स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी चार्ज टू एनी वन ऑफ देम. दैट इज माय कंसर्न. मेरे लिए प्रॉब्लम तब होता है व्हेन आई एम नॉट श्योर अबाउट द procedure of directly attributing cost to the product. वो हम लोग इसमें देखेंगे. This is about attributing common cost to the customer through per unit. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, डीपीपी हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर. जिज्ञासा लिमिटेड. जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड has 30 retail stores of uniform sizes, fruity and sweetie retails across the country. Mainly 3 products, namely butter jelly, fruit and nuts, and icy cool, are sold through these retail stores. JIL maintains stock for all retail stores in a centralized warehouse. Goods are released from the warehouse to the retail stores as per requisition raised by stores. Goods are transported to stores through 2 types of van. One is normal and the other one is refrigerated. So guys, there are 2 types of cost structures. One is for normal production. One is for those units which don't need refrigeration. And the other one will be only for those who need refrigeration. These vans are to be hired. ओके आपको सबसे पहले दी है वेयर हाउसिंग कॉस्ट, उसी के जैसे आपको नजर आएगी रिटेल कॉस्ट, और ये जो बीच का जो आइटम है हेड ऑफिस कॉस्ट. हेड ऑफिस कॉस्ट में सैलरी, वेजेस एंड ऑफिस एडमिन कॉस्ट है. अच्छा, इफ यू लुक एट वेयर हाउसिंग कॉस्ट एंड रिटेल कॉस्ट, यू हैव refrigeration cost separately recorded and other cost recorded separately. Okay. Okay, your normal van takes 3,200. Your refrigerated van cost you 4,900. Now listen, now read the next part carefully. The chief financial manager asked his finance managers to calculate profitability based on 3 products sold through fruity and sweetie retail stores rather than traditional methods of calculating profitability. See the detailed information. Number of cartons per cubic meter.
42. And number of items per carton 300. Boss, इसका मतलब 12,600 units you have quantity per cubic meter. एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टन्स बॉक्सेस, एक क्यूबिक मीटर में 42 कार्टन्स और एक कार्टन में 300 यूनिट्स. वैसे ही 28 कार्टन्स इंटू 144, 4032. 2880. This is your quantity in terms of units per cubic meter. Time in warehouse is not the same. किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को आधा महीना लग रहा है. Okay, so the period cost can be different, huh, guys? अगर मंथ टाइमिंग अलग है हर एक प्रोडक्ट के लिए, तो नेचुरली पीरियड कॉस्ट विल ऑलवेज बी चार्ज बेस्ड ऑन पीरियड. सो एब्जॉर्प्शन रेट विल बी अप्लाइड ऑन द पीरियड. सेलिंग प्राइस अवेलेबल, परचेस प्राइस अवेलेबल. सेलिंग प्राइस में से परचेस प्राइस माइनस करोगे तो यू विल गो वन स्टेप टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट. Butter jelly and icicle are required to be kept in refrigerated conditions. Only butter jelly and icicle require refrigeration. Total volume of all goods sold per month 40,000. 40,000 में से 25,000 need refrigeration. Carrying volume each van is 64 cubic meter required. Calculate profit using direct product profitability method. Have a complete glance on the question. Once again, take 2 minutes. Have a glance on the question. I'm giving you solution.
ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, अब ध्यान से सुनना, तुमको प्रॉफिट निकालना है हर एक यूनिट का। तो एक चीज वेरी, one thing is very clear, that you have selling price, you have one direct cost available, material. Now the problem is your these cost structures. Warehousing cost and retail cost, from total it needs to be converted into, cost of three different types of products. Are you understanding the transformation required here? अच्छा, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, that you have two cost structures where refrigeration is not required. It is a different cost, not a refrigeration cost. Not entire quantity needs refrigeration. So we will have to calculate things in a different manner. Secondly, I don't need head office cost. Head office cost is not a cost which is incurred by these products or these departments. They are charged on me. I don't want that cost to be there. I want only the cost which is required, which is incurred for the product. Salary and wages of head office staff and other administration cost is not incurred. It is a total, it is a complete fixed cost. Admin general it is. It has got nothing to do with individual product. But warehousing and your retail store cost is incurred for all the three products. So that cost needs to be split. अब इसका ध्यान से calculation देखना. I will show you calculation of warehousing. Warehousing में I'm going to split cost into two parts: general, refrigeration. जनरल में 27 + 28 क्या था वो? लेबर एंड स्टाफ मटेरियल हैंडलिंग, लेबर एंड स्टाफ 27, मटेरियल हैंडलिंग 28, refrigeration 152. So my refrigeration cost is 152 and my other cost is 55. So guys, I need to divide this by total quantity per cubic meter. 55,000 is incurred on 40,000, but refrigeration is required only for 25,000, right? Yeah. Calculation समझा आपको? Have you understood the calculation here? तो cost per cubic meter 55,000 divided by 40,000, 1.375 and 6.08. But this is what your general overhead per cubic meter, refrigeration cost per cubic meter, and that is incurred per month, but we have not utilized these services on per month basis. They are different. So guys, ये तो change करना पड़ेगा. So my general cost
I have three products. I have three products: butter jelly, fruit and nuts, butter jelly, fruit and nuts, icy cool. करेक्ट. अब इसमें से रेफ्रिजरेशन किसको नहीं लगता? Butter jelly and icy cool are required to be kept under refrigerated condition. So butter jelly icy cool को refrigeration लगेगा, तो उनके लिए 1.375 plus 6.08. लेकिन फ्रूट एंड नट्स के लिए 1.375 आ रहा. समझ में आया? 1.375 plus 6.08, 7.455, 7.455, 1.375. Let me remind you, this was all per month, but we haven't utilized these for 1 month. So we have utilized them for 1.5 and 0.5 months. So 7.455. This is what my cost structure is. Have you understood this? मैंने टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर में लाया. पर स्क्वायर मीटर को I realized that it was per month, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ा into the required period. अच्छा, ये जो भी है ना, ये पर स्क्वायर मीटर ही है अभी तक. Okay, can you complete calculation of retail cost exactly like this? और चलो मैं तो बोलता हूँ वैसे भी टेक्स्ट बुक में दिया है, उधर से ही देख लेना तुम लोग. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. ये देखो, ये बोल रहा था मैं आपको. वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपको दी थी 1.38, 6.08. वैसे रिटेल का कैलकुलेशन कर लिया. नाउ द नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में योर कॉस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल और आपको क्लियर कट बोला है कि 64 क्यूबिक मीटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो भी आपको पर क्यूबिक मीटर रेट मिल गया. वो भी आपको पर क्यूबिक मीटर रेट मिल गया 50 and 76.56. Have a glance on those workings. Have a glance on working note 2. Have a glance on working note 3 and let me know. Working note 4 is already discussed on the top. हम लोग को क्वांटिटी निकालने को बोला था, हम लोग ने कब का निकाल के बैठे. You already have that in your notes. Working note 2, 3, 4 पढ़ लो एक बार. I'm starting with a solution.
Okay, done. So guys, you have warehousing cost per cubic meter. You have warehousing cost per cubic meter for 3 products. You have retail cost per cubic meter. And you have transportation cost per cubic meter. Now look at this statement. हमने एक और statement बना दिया है. See, they have directly included there. Selling price per unit, purchase price per unit, आपको directly gross profit मिला है. Okay. अब ये जो 7.46 6.30 को ट्रांसपोर्टेशन मिला है, that is per cubic meter. And you already know quantity per cubic meter, बच्चा लोग. You could have gone for a different presentation also, different working note also, which I generally prefer. Total cost, this is per cubic meter. 1 cubic meter का cost दिया है. 1 cubic meter में कितने units बैठते हैं वो अगर आपको पता है तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हो ना रे सीधा. Cost per item is this. Cost per item is this. आई बात समझ में? That amount is deducted. So basically this is gross profit and this is your newly charged per unit cost, and this is your final profit figure. Have a glance on this and let me know if you have any doubt. This was the most important part of this chapter. अब इस chapter में सब चुन्नू मुन्नू item बचा है. Have a glance on it. Have a glance on the entire solution quickly. Yes, absolutely right, Sakshi. And that is why the common cost, which is allocated cost, head office expenses and all, which is incurred and simply attributed or compulsorily charged to product or department, are ignored.
Something that can be directly charged to the product, something that is directly incurred for the product will be charged. Chalo. Is it done? Now, the next concept that we are going to discuss, see, first two concepts were very important. अगर आपको याद दिला दूं मैं तो मेरा पहला चार्ट याद रखिए आप. If you recollect, this was my first chart. This was my first chart. Correct? This was my first chart. Strategic evaluation डिटेल में डिस्कस कर लिया, डीपीपी भी डिटेल में डिस्कशन कर लिया. अब ये सेगमेंट डिस्कस करना बाकी जो एकदम सिंपल है. Customer profitability analysis. Customer profitability analysis is something where you analyze everything by considering separate customers as a base. Customer segmentation is done. So you may have a different discount policy for different types of customers. You may have frequently visiting customers. They may have a special treatment. They may have special pricing structure for you. They must be getting something complimentary. Anything can happen. So that evaluation is to be done. मैं directly question solve कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. Question number 3, illustration number 3. A and B are two customers of XYZ Limited, and it is a manufacturer of audio players. Selling price is 5,400. Production cost is 4,420. 5,400 is your selling price. 4,420 is your variable cost. So $980 per unit. 5,400 minus 4,420. 980 per unit is your 980 per unit is your contribution. Correct? You still have some more cost structure. Order processing cost is 2,000 per order and delivery cost is 3,500 per delivery. That means question is adopting activity-based costing concept where your cost driver is number of orders and number of deliveries. Number of orders and number of deliveries. Are you getting me? Number of orders and number of deliveries. Quantity 350, 500, number of orders 5 of 70 each, 10 of 50 each.
नंबर ऑफ डिलीवरीज ओनली फॉर कस्टमर ए, कस्टमर बी को हम लोग डिलीवरी नहीं दे रहे. The company's policy is to give discount of 5% on selling price on orders for 50 units or more. बाबू 50 यूनिट्स से ज्यादा, 50 यूनिट्स और 50 यूनिट से ज्यादा अगर ऑर्डर साइज है तो डिस्काउंट देंगे. मतलब कस्टमर ए कस्टमर बी बोथ आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट बिकॉज बोथ आर ऑर्डरिंग 50 और मोर. Plus, there is 8% further discount on undiscounted selling price. That means the original selling price if the customer uses his own transport to collect the order. So this 8% discount, this 8% discount will be applicable only for B. क्योंकि A तो मेरा डिलीवरी यूज कर रहा है, तो डिस्काउंट विल बी गिवन टू B. The company's policy is to give discount of 5% and selling price of हो गया. Assume the production levels are not altered to these orders. Analyze profitability comparing profit per unit of each customer and comment on discount policy. अब ये एकदम सिंपल है. देखो पहले 5% डिस्काउंट दिया, फिर 8% डिस्काउंट दिया. हैव अ ग्लांस ऑन दिस. स्क्रीन पे देखना सिर्फ. स्क्रीन पे देखो. ओके, यहां तक समझ में आया. सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट किया इन लोगों ने, रिवाइज सेलिंग प्राइस मिली, उसमें से कंट्रीब्यूशन हटा दिया तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय your own respective quantity structure gives you total contribution. चलो मुझे बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो. इसको सॉल्व करके टाइम पास करने का मतलब नहीं है, इधर से रफा दफा कर देंगे इसको. Wherever a different calculation was required, I did it. Purpose you have seen that. मैंने एक अलग illustration भी लिया है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट इवैल्यूएशन के लिए, और डीपीपी का एक कैलकुलेशन मैंने सामने करके दिखाया. यहाँ पे क्लियर है ये सब? हाँ, अभी आपके पास ऑलरेडी कॉस्ट ड्राइवर का रेट और कॉस्ट ड्राइवर पड़ा है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 and 10, number of orders 5 and 10 both will be multiplied by 2000, and number of deliveries 5 multiplied by 3500. Correct? So वो भी मैंने माइनस कर दिया, देख लो. तो यू आर गेटिंग टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर, बट प्रॉफिट पर यूनिट अगर चाहिए तो क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यू आर गेटिंग कॉस्ट क्वांटिटी पर यूनिट. अब इसका प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा है, इसका प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा है, इसका प्रॉफिट पर यूनिट कम है. व्हाट कैन बी द रीजन? What can be the reason? The biggest reason is discount. Simple. So when you have this customer wise profitability with you, you will come to know what exactly has gone right and what exactly has gone wrong.
दोनों की सेलिंग प्राइस, दोनों के प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों के प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, दोनों के प्रोडक्ट का अगर दोनों ये स्ट्रक्चर सेम है, फिर उसके बावजूद अगर डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग वियर्ड हैपनिंग। तो आपने सबसे पहले एनालाइज किया कि इसको 8% डिस्काउंट ज्यादा जा रहा है। नहीं, 8% डिस्काउंट जा रहा है, लेकिन ये भी तो बच रहा है मेरा 17,500। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। टोटल 17,500 में स्पेंड कर रहा हूँ, टोटल 17,500 में स्पेंड कर रहा हूँ डिलीवरी के नाम पे, ए पे। अब 17,500 डिवाइडेड बाई 350, 17,500 डिवाइडेड बाई 350, 50 रुपया पर यूनिट डिलीवरी पड़ती है मुझे। उसके चक्कर में मैं 432 एक्स्ट्रा देके बैठा हूँ। अंडरस्टूड ना? जो कस्टमर डिलीवरी नहीं लेता उसको मैं डिस्काउंट देता हूँ। अच्छा, जो कस्टमर डिलीवरी लेता है वो 350, 350 यूनिट्स का डिलीवरी ले रहा है, 350 यूनिट्स के डिलीवरी के लिए 17,500 खर्च कर रहा है, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 पर यूनिट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 पर यूनिट। तो 50 पर यूनिट बचाने के चक्कर में तुम लोग 432 का डिस्काउंट दे रहे हो। या तो बंदे से बात करो, कस्टमर बी से, नेगोशिएट योर डिस्काउंट पॉलिसी, और उसको बोल दो कि भाई मैं 70 रुपए के ऊपर, 70 रुपीज पर यूनिट के ऊपर तेरे को डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो यू विल बी इनडिफरेंट। समझ में आया? अरे ये सर, नो जल्दी बोलो यार। दिस इवैल्यूएशन इज पॉसिबल, this evaluation is possible only if you have a customer wise analysis, guys. चलो वो थियरी पढ़ लो, उसके नीचे दिया है वो। Just have a glance on the theory which is given after the question, after the solution, and let me know once you are done. अरे 70 इधर, इसको बड़ा कर रही है। साक्षी, 70 डिलीवरी चार्ज लग रहा है, 432 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 70 तो अनअवॉइडेबल है ना, इररिलेवेंट कॉस्ट फॉर मी, उतना तो खर्चा आएगा ही, और ऊपर का क्यों कर रहा हूं मैं? तो आई आस्क माय कस्टमर भी कि भाई तू रहने दे, तेरा गाड़ी वाड़ी मत निकाल, मैं पहुंचा देता हूँ माल, इट विल कॉस्ट मी ओनली 70 इंस्टेड ऑफ 432। तो 70 के लिए तो इंडिफरेंट हूं मैं, 70 तो खर्च करना ही है मुझे। आई होप साक्षी यू अंडरस्टूड। एक बार पढ़ लो लास्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। वो चार्ट, चैट बॉक्स जरा बड़ा कर दो ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आईसीआई वेबसाइट, अर्नव, कहाँ से मिलते हैं स्टडी मटेरियल आपको बाकी के? मैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से ही पढ़ा रहा हूँ, उसी में से आएगा। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट।
Activity-based costing in advanced manufacturing environment. See, why do we need activity-based costing? First of all, आपको याद होगा कि आपके common overheads बहुत बार machine hour से divide होते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपके सारे expenses, जरूरी तो नहीं है ना कि आपके सारे के सारे expenses machine hour से related हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने वो डिस्कशन किया भी था पिछले, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डिटेल में समझाया था. कॉमन एक्सपेंसेस को स्प्लिट करते हो डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट में रेंट भी आता है, डेप्रिसिएशन भी आता है, मेंटेनेंस भी आता है. नॉट ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू मशीन आवर्स. नॉट योर ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू मशीन आवर्स. तो मशीन आवर्स से रिलेटेड क्या है? सिर्फ उतना ही मशीन आवर्स से डिवाइड होना चाहिए. बाकी के एक्सपेंसेस के लिए रिलेटिव बेस बना लो. जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग कभी कंसिडर नहीं किया अलग से, तो it is considered separately and number of orders is considered as a cost driver, as a base. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से बेस होगा, सेटअप कॉस्ट के लिए अलग से बेस होगा, सारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स अलग करोगे, which is an advantage of activity based costing. That means you allocate cost to the customer in the most accurate manner. सेटअप कॉस्ट जाएगी नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से, इंस्पेक्शन कॉस्ट जाएगी नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के हिसाब से, ऑर्डरिंग कॉस्ट जाएगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से, इवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैच कॉस्ट कैन आल्सो बी चार्ज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्पैचेस. This was not possible earlier because we were simply bluntly taking machine hours as a base, and that was a wrong, that was a mistake. So basically, due to this, the advantages, the global competitiveness, when you see, you get the most accurate cost structure. See, it's improve the value received by the customer, because more relevant and timely information is required for this organization for long-term advantages. The traditional approach of estimating demand and producing accordingly does not go a long way. The resolution, as a resolution to this, organization increasingly started adopting just-in-time manufacturing. You basically, instead of push approach, manufacturers have applied pull approach. So, workplace automation. Labor comes with problems. So wherever it is possible to reduce your labor, people have opted for it, because workers don't ask, I mean, the machine doesn't ask for bonus, machine doesn't go on strike. There is no machine union which troubles you. So you can peacefully plan and continue with your required production process. So wherever it is possible, that automation has to be done. Wherever it is possible, we can replace a human by the machine. It is done these days in all the industries. So there is a drastic change in the cost because of all this. Then some non-unit level costs, non-value added costs like setup costs, inspection costs, material handling costs can also be charged. That's what I said. That is what I said when I was explaining you activity-based costing. The same thing is mentioned in the next part. Various cost drivers are used and the cost is charged. Now, let's have a brief discussion on value-added activities and non-value-added activities. We have already done that. Still, it can be asked as MCQ, so I'm discussing it. Value-added activities are those activities which actually see the transformation of raw material into finished goods. Okay.
And non-value added activities means they're either supportive, but they don't act, you can't actually see the material change, the output changing its form. So it just supports the production activity. So when you are dealing with value added activities, you're actually transforming it. Now, if you have crushing process for groundnuts oil manufacturing, suppose you have first process as crushing process, second one is refining, third one is filtering, fourth one is blending, fifth one is finishing, sixth one is packing. I understand at the end of every process, the form of output will change. Naturally, the cost changes. That is why we have studied process costing. After every stage, cost will be different. वो सब पता है मुझे. बट यार ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अलग प्रोसेस के बदले ब्लेंड आप क्रशिंग रखो, क्रशिंग के बाद रिफाइनिंग एंड फिल्टरिंग एक साथ हो सकता है. You can go for automation. Refinery and filtration can be clubbed together. Time बचेगा, पैसा बचेगा, labor बचेगा, which will ultimately help you out in increasing your profitability. Blending and finishing can be clubbed together, or finishing and packing can be clubbed together. Possible है. So you decide activities, then decide whether it is necessary. Yes. So that means it can't be replaced. It is a value-added activity. If the answer is no, then change it. Is the activity efficiently performed? Yes. Agar aapki value-added, if your value-added activity is efficiently performed, no? If your value-added activity is efficiently performed, trust me, you will never have a problem in life. Your entire cost structure will be within your control, because your budgeted cost and actual cost will almost be the same. Your budgeted cost and actual cost will almost be the same. In an activity, sometimes value-added, sometimes non-value-added. Now that is possible when you have like certain factors like WIP. If I'm taking example of WIP will not be packed. So crushing will be there, refining will be there, filtering will be there, और वो आ गया बीच में, year end. So that means I don't need packing and finishing, no, because वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं मैं. तो हो सकता है कि for WIP certain activities are non-value added, but that depends on situation to situation. Non-value added means non-value added means they are not valued by internal or external customer. They do not improve quality or function. मैंने बोला था ना, form of output अगर change ही नहीं हो रहा है तो non-value added. इतना simple है. They create waste, result in delays, add some cost to the concern, cost structure. This is storage, moving, this is storage हुआ, moving हुआ, movement of material from one place to another, waiting time between two processes, or waiting time just because you're not having material. Then you have inspection, then you have scheduling. See, all these activities are needed to carry on the business process, but then they are not directly changing the form of the output. तो इनमें से अगर तुम लोग कुछ कम कर सकते हो तो that will definitely bring down your cost structure, is what we have done even in case of value added activities, even in value chain analysis. Okay, read the next page. एक और important concept करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टाइम तक पढ़ो, उसके बाद का मैं डिस्कस करूंगा. यहां तक पढ़ना.
उसके बाद का आई विल डिस्कस. Is it done, guys? Okay. Now, what is manufacturing cycle time? Manufacturing cycle time is actual production time. Actual production time. So इससे रिलेटेड ना एक कॉन्सेप्ट है, वो सॉल्व कर लेते हैं. Yes, question number 4. Illustration number 4. Queenstown Furniture has been manufacturing high quality wooden doors within the forest of Queenstown since 1952. Management is having emphasis on creativity, engineering, innovation, experience to provide customers with the door they decide, whether it is a standard design or the one of kind custom door. The following information pertains to operations during April. Processing time 9 hours. This is my value added time because I'm actually producing the product and I'm actually converting raw material into finished goods. For me, inspection time is non-value added. Waiting time is also non-value added and movement is also non-value added. Units per batch, 60. Okay. Average non-value added time per batch. Average non-value added time per batch, 1.5 plus 6, 7.5. So ये आएगा 15 hours. Average value added time per batch, 9 hours, where the production is actually happening. Manufacturing cycle efficiency. अब समझाता हूं आपको पे क्या है.
आपने 9 आवर्स लिए एक्चुअली प्रोड्यूस करने के लिए और 15 आवर्स लिए उसको प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए. दैट मीन्स आपने 24 आवर्स काम किया है फॉर 60 यूनिट्स. आपने 24 आवर्स काम किया है फॉर 60 यूनिट्स. सो 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 60. 24 hours divided by 60 units is nothing but 0.4 hours per unit. This is your production lot. Cycle efficiency. Cycle time, sorry. This is your cycle time. 24 घंटे लेते हो तुम लोग एक 60 यूनिट बनाने के लिए. मतलब एक यूनिट के लिए हाउ मच यू आर टेकिंग? एक यूनिट के लिए हाउ मच यू आर टेकिंग? एक यूनिट के लिए हाउ मच यू आर टेकिंग? 0.4 hours. This is your cycle time. तो फिर आपकी एफिशिएंसी क्या है? अरे अगर 24 घंटे में से तुम लोग सिर्फ 9 आवर्स में ही प्रोडक्ट बनाते हो तो 9 डिवाइडेड बाय 24, यू आर एक्चुअली टेकिंग 37.5% टाइम. मतलब 62.5% आपका जा रहा है वेस्टेज. 62.5 आपका जा रहा है वेस्टेज. आई होप यू गाइज आर रियलाइजिंग व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज द फर्दर इवैल्यूएशन. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 9 घंटा एक्चुअल प्रोडक्शन, 24 घंटा टोटल वर्क. तो 9 आवर्स काम, 24 घंटे के टोटल काम में 9 घंटा ही प्रोडक्टिविटी है. तो मतलब 37.5 आपकी प्रोडक्टिविटी है. अब 37.5 आपकी प्रोडक्टिविटी है का मतलब 62.5 इज नॉन वैल्यू एडेड वेस्टेज. समझ में आया? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्विकली. देख लो, इसका सोल्यूशन गो थ्रू कर लो.
Done. Okay then. Now we are shifting slightly towards activity based costing. से हम लोग शिफ्ट होंगे अभी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के लिए, which will need some proper understanding. So we'll continue that tomorrow. तुम लोगों को कुछ query है तो मुझे अभी बोल दो regarding whatever we have done so far. By Thursday, I'm planning to complete this module. First module अपना complete हो जाएगा, then we'll be heading towards the second module. Okay then. Thank you so much, guys. See you tomorrow. Have a nice time. Have a great day. Learn something new today. Okay. Bye-bye.